The first slide, something different. You can't see it, I know it. Right, this is a website called Ipsos. And what does Ipsos do? Right? It's a French website where it carries out a survey, carries out an analysis every year, and it puts out the trustworthiness of it, the trustworthiness index of armed force members. That is, हर देश का जो मिलिट्री है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है, उसके बारे में ये अंदाजा लगाते हैं। हर देश का ग्लोबली, इंटरनली सब कुछ मिल मिला के इसका रैंकिंग ये लेते हैं। और ये तो बड़ा मजे की बात है और फकर की बात है, राइट? दे हैव चोजन इंडिया एज द बेस्ट मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस ग्लोबली। क्या बोलते हैं ये? एज ऑफ जुलाई 30, 2022, India ranks first in the Ipsos Trustworthiness Index of Armed Forces members, indicating a high level of global trust in the country's military personnel. This reflects the confidence that people have in the integrity, bravery, and commitment to duty exhibited by armed forces of India. इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप कोई भी सर्वे इंडिया में ही ले लीजिए, वो सब बोलेंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस आर द हाईएस्ट रैंक ऑन ऑल सर्विसेज इन इंडिया। ये बार बार मैं बचपन से देख के आ रहा हूं। अब इट इज इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड, दैट्स द ब्यूटी। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ, दिस इज द रैंकिंग, अभी नजदीक देखेंगे कि यू हैव अ लुक एट इट। इंडिया इज एट 64, उसके बाद स्वीडन और यूएसए आता है और वो 8 पॉइंट पीछे हैं, और उसके बाद वगैरह 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 वगैरह, राइट? ये शायद, एंड देयर ओनली 20 कंट्रीज and the 24 rankings because some countries have tied and all that. Indian Armed Forces and its members have beaten everyone hands down, and if I may say with lot of pride, pants down. कि आप देखिए ये, first is India with 64, then comes Sweden and USA at 56, 8-point lead. Then France, UK, Australia, Canada, Spain, Malaysia, वगैरह वगैरह वगैरह, down to South Korea. The interesting point in this, the most interesting point in this is what? You've seen it all. पाकिस्तान और चाइना का इसमें नाम और निशान नहीं है। ये कहीं पहले 24 में आता ही नहीं है। So anyway, who trusts Pakistan army? No one. And China is not far behind. No one trusts the PLA. So they are out. But India being trusted globally as the highest ranked military organization whose members are fully trusted is something I also didn't know. It is a reflection of the hard work done by my predecessors and their predecessors and the culture and traditions of this armed forces in our country and abroad. It speaks of the integrity. It speaks of the love of the armed forces for its people and the love of the people for the armed forces. It also speaks of the confidence which the global community has in the armed forces of our country. Trust. And when you go for war, when you go for conflict, when you go for many things, you place trust in your seniors, you place trust in your juniors. जब तक आप आपके जूनियर्स और सीनियर्स के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, लड़ाई जीते नहीं जाते।
और बात यह है कि वियतनाम में जब अमेरिका वहाँ वियतनाम वॉर चल रहा था, लोग उनके जवान ऑफिसर्स को भी मार देते थे पीठ के पीछे। ये बहुत बार हुआ है, इसको बोलते हैं फ्रैगिंग। इंडिया में मैंने आज तक ये नहीं देखा, मेरे सर्विस में बिल्कुल। यहां तक इन कॉम्बैट सिचुएशंस मेरे जवान आए मेरे सामने और खड़े हो गए, बोले भाई हमारा ऑफिसर को हम बचाएंगे। और उसी तरीके से हमारे ऑफिसर, मैं जवानों को बचाता था। ये था ट्रस्ट बिटवीन ऑफिसर्स एंड जवान, और वही ट्रस्ट है हमारे आर्म फोर्सेस मेंबर्स और हमारा लोगों के साथ। और इसी ट्रस्ट पे कायम होता है देश का एक सबसे बड़ा पिलर। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस है इज द लास्ट बेस्टियन ऑफ दिस नेशन। और ये बात अब दुनिया में बोला जा रहा है। मेरा पर्सनल एग्जांपल अगर लेंगे तो मैं एक बार गया था यूएसए में उस कोर्स में बहुत दिन के बाद गया, कोई इंडियन आर्मी ऑफिसर गया था या इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर गया था। तो वो बोल रहे थे कि भाई वी आर एब्सोल्युटली टेकन अबैक बाय द वे द इंडियन आर्म फोर्सेस पीपल बिहेव। राइट, दिस इज द ग्लोबल व्यू एंड दिस इज द नॉर्मल इंडियन व्यू। पर आजकल मेरे को, इसीलिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। ये वीडियो इसीलिए जारी किया है कि मैं आप सब लोगों के जरिए उन लोगों के ऊपर के पास एक संदेशा भेजना चाहता हूँ। और वो संदेशा है हमारे पॉलिटिशियंस को, और खास करके मणिपुर में। वहां अफसोस की बात है कि लोग फौज को पसंद करते हैं, पर हमारा जो राजनीतिक लोग नहीं करते। और इसीलिए इंडियन आर्मी ने ये खबर फैला है, दिस इज देयर ऑन द ट्विटर। और ये नौबत कभी आना नहीं चाहिए था कि फैब्रिकेटेड अटेम्प्ट्स टू malign image of Assam Rifles, ये कभी आना नहीं चाहिए था। मैं मानता हूं कि even our paramilitary forces are all part of the armed forces. They all generate the trust globally. And the Assam Rifles, जिसका परंपरा 100-150 साल से चला आ रहा है, इट्स ऑल आर्म्स फोर्स, ऑल इंडिया फोर्स with some more portion from the northeast, but northeast is huge. It is officered by the army officers. It is operating under the army through proper instructions of the armed forces, Indian army in Manipur and everywhere. That has been maligned. Why? Rajniti, politics. We have to think very seriously. Can you imagine a situation that an armed force, the last bastion of your nation, is called in aid of civil authority by the state, and the state says, we don't need you, and the army is forced to bring this out? And that too in a state for the past 3 months, people are being killed. There's a war taking place. There's a buffer zone being established as if it's a LAC between two communities. And the armed forces are not being allowed to do their job. And they have to come out with such a statement. The Indian Army, please note, this is not
from the Assam Rifles, ये इंडियन आर्मी का है, ट्विटर में है, एक शब्द में है, जारी है। ये लास्ट में देखिए, इंडियन आर्मी एंड असम राइफल्स assure the people of Manipur that we will continue to remain firm and resolute in our actions to prevent any attempt that could result in furthering violence in an already volatile atmosphere. Does the army have to ever talk like this? If the army has to talk like this, why call it? Somewhere there's something wrong. And that's what I wanted to put this out of. I have the pride. The world says the Indian Army is the most trusted man, or the Indian Army, Indian Armed Forces member is most trusted. But certain elements in Manipur and don't feel so. This is there today in Twitter, open. Indian Army won't be able to solve anything in Manipur. This is from a chief minister. He has said it. आप सब लोगों को पता है. And this is what another of my friends, or I won't say friend, my brother in uniform has said. For this individual to be now the CM, he should be thankful to the over 3 decades of sweat and blood of his countrymen who donned uniform to control secessionist tendencies in Assam and other neighboring states. This is a fact. He has forgotten that the army cannot solve anything. Can he solve anything? हम भी हैं, हम भी तो थे वहां, पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं. So somewhere हमें सोचने की जरूरत है. मेरा बड़ा सिंपल तरीका है, अगर फौज की जरूरत नहीं है आप बेच दीजिए. अगर आप सोचते हो कि और सेंट्रल फोर्सेस अच्छे हैं फौज से, या पुलिस फोर्सेस अच्छे हैं, आप सब बेच दीजिए. बट इफ यू कॉल द आर्मी, don't demean it. When you call the armed forces out and you demean them, you are demeaning the nation and you are demeaning yourself. I felt very bad. I felt very bad that General Shaukin Chauhan expressed something like this in another channel. It is not just about the Assam Rifles. It's an attitude. You can't, just because of political gain, say something about an organization which the world says is the best in terms of trust. I leave it at that now. Let me see. Tomorrow I'm going to put this video out. I would like you to send this video to everyone. Let me see what people say. In my entire life, I have never seen any one officer or Jawan or a JCO take sides one against the other in a situation of this kind. My message to the people who are in power, whichever political system they are from, or whichever political party you are from, don't do this to the army.